Hello and welcome, dear students, on your own YouTube channel, Dream English with Tanveer. Boys and girls, we are meeting after a long time. Well, nice to meet you. I'll start with the good news, okay? Well, from now onwards, I'll be uploading a video lecture series on poetry regularly. So this lecture series is going to be very important and informative, okay? So don't miss any update. Stay connected, stay tuned in. Boys and girls, let's start with Mehjoor. Today we'll start with Mehjoor and his poetry. And this lecture is solely devoted to Mehjoor and his poetry. In the first half of this lesson, we will learn about Mehjoor, कि वो कहाँ पैदा हुए थे, ठीक है, his birth, and then his poetic achievements, ठीक है, and then in the later section of this video we'll form a comparison between Mehjoor and William Wordsworth. So guys, grab a pen and a paper and be ready to jot down the important details, okay? Well, let's start. Introduction to Ghulam Ahmad Mahjoor. Well, I haven't given here date of death. You can just check it on Google. It's there. He was born in 1887 in Kashmir, in a village which is called Pulwama. Okay, Pulwama district में ये पैदा हो गए थे, and there is a village known as Mitrigam. It's a very beautiful village, a picturesque village, okay? It's loaded with scenic beauty. So he was born there. And then he worked as a patwari, okay, as a petition writer also. Then he tried his hand at Persian poetry, but he failed utterly, okay? He got his name and fame in Kashmiri poetry. Okay, so he also tried his hand at Urdu poetry, and in one of the symposiums he recited one of his Urdu poems, but he was laughed at, and it did not it did not achieve any success for him. So he shifted to Kashmiri and he started writing in Kashmiri language, and then onwards he became a legendary poet of Kashmir. And boys and girls, he's known as Shair-e-Kashmir. That means the poet of Kashmir. Poet of Kashmir. We can call him the state poet of Kashmir because he's a representative poet of Kashmir, boys and girls. This is very informative lecture, okay, full of important details, important points. So I request you to jot down each and every point, okay? So let's start. Mehjoor incorporated themes closer to life and times of his age. Boys and girls, आपको पता है Mehjoor lived during a period which is called Dogra period. ठीक है, and in this period Dogras ruled. Dogra जो थे यहाँ पे कश्मीर में, they ruled Kashmir, and they were very brutal and they were very tyrannical, okay? They wrought immense oppression on Kashmiri people. So he incorporated themes which were closer to life. That means Mehjoor की poetry जो है वो अफसानवी नहीं थी. It wasn't imaginative poetry wholly and solely, though he talked somewhere, he talked about nature, natural places, okay, and sometimes he talked about romantic love also. But his poetry is closer to life. His poetry is a reflection and a mirror to his own times. लिटरेचर मिरर ही होता है, एक आईना होता है जो आईना दिखाता है एक दौर का, एक पीरियड का जिसमें कोई पोइट लिखता है, ठीक है? उस दौर में जो कुछ हालात होते हैं, जो कुछ स्टेटस को होता है, जो कंडीशंस होते हैं प्रिवेलिंग, तो उस दौर के लिटरेचर में वही चीज़ें पाते हैं हम, ठीक है?
सो लिटरेचर इज द रिफ्लेक्शन ऑफ एन एज। इसी तरह इसकी लाइफ है, इट्स क्लोजर टू लाइफ। इसी तरह इसकी पोइट्री है, इट्स क्लोज टू लाइफ। दैट मीन्स इसने जो रियलिटीज़ ऑफ लाइफ है उनको इंक्लूड किया अपनी पोइट्री में। समटाइम्स ही टॉक्स अबाउट अ पेजेंट गर्ल, ग्रीस कूर, एंड लाइक वर्ड्सवर्थ, जिस तरह वर्ड्सवर्थ बात करता है सॉलिटरी रीपर के बारे में इन द पोम सॉलिटरी रीपर, तो उसमें भी एक लड़की है, ठीक है, जो खेत में होती है। एंड सेम इज द केस विद Mehjoor. He talks about the peasants, the oppression on peasants, the oppression on common people, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसकी पोइट्री में हैं। एंड बिफोर Mehjoor जो पोइट्री थी कश्मीर की, कश्मीरी पोइट्री, इट वॉज डायडेटिक, ठीक है, और इसमें पर्शियन एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा थे। Like we had poets like Lal Ded, we had poets like Sheikhul Alam, ठीक है, अब्दुल अहद आज़ाद। तो उनकी पोइट्री में ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी थी और वो पोइट्री ज़्यादा इमेजिनेटिव थी, ठीक है, और उनमें ज़्यादा जो है मॉरल वैल्यूज़ को इनकलकेट करने की कोशिश होती थी। बट जो हमारा Mehjoor है, इट्स अ यूनिक फिगर। Mehjoor itself is an age. He's a representative poet of Kashmir, ठीक है। ही इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ ट्रांजिशनल पोइट ऑफ कश्मीर। उसने जो उस वक्त के पोइट्स थे वो पर्शियन एलिमेंट्स को ज़्यादा इनकॉर्पोरेट कर रहे थे अपनी पोइट्री में, पर्शियन टर्मिनोलॉजी को। तो उसने थोड़ा सा ब्रेक लिया उससे और उसने कश्मीरी एलिमेंट्स, कश्मीरी टर्मिनोलॉजी, कश्मीरी जो है लिंग्विस्टिक आइटम्स और कश्मीरी कल्चर को इनकॉर्पोरेट किया अपनी शायरी में। इसलिए वी कॉल हिम शायर कश्मीर, पोइट ऑफ कश्मीर। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। His poetry is an emblem of nationalism, boys and girls. He is a nationalistic poet also, क्योंकि he talks about freedom. He talks about the oppression which was wrought by these Dogra people on Kashmiri people, okay? Kashmiri masses, ठीक है, कश्मीरी जो कॉमन पीपल थे उन पे किस तरह जुल्म होता था। जो उस वक्त की एरिस्टोक्रेसी थी, ठीक है, तो वो किस तरह जुल्म करती थी पेजेंट्री पे। जो पेजेंट्स होते थे वो वर्क करते थे किसी लैंड पे, किसी फार्म पे, और उनको बदले में क्या मिलता था? नथिंग। सो ही इज एन एम्बलम ऑफ नेशनलिज्म, इज अ सिंबल ऑफ नेशनलिज्म। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्रिटिक्स एंड स्कॉलर्स एंड देयर व्यू पॉइंट्स अबाउट Mehjoor। पहले ही हम लेते हैं इंडियाज नोबल लॉरेट टैगोर। Tagore once visited Kashmir and he got to read, few of the poems of Mehjoor. Actually, they were in translation. Okay, so he read some of the poems of Mehjoor and he got very ecstatic, very excited, very happy on hearing these poems, on reading these poems. So he called Mehjoor the Wordsworth of Kashmir. Okay, such is the stature, such is the grandeur, such is the caliber of Mehjoor. He's not a common and ordinary figure in poetry. He's not a common poet, okay? He's a legendary poet, boys and girls. Now, his poetry is like a beautiful lotus in bloom. Who says it? Not me. It is said by this great critique, Zind Kaul, great scholar, great critique. क्या बोला उसने? His poetry is like a beautiful lotus in bloom. लगता है कि एक कंवल खिला है। इतनी खूबसूरत इसकी पोइट्री है, इतनी जो है रिमार्केबल इसकी पोइट्री है। नेक्स्ट पॉइंट, Mehjoor visited many villages as Patwari of Kashmir. He got to know about the miseries and the pathetic conditions of Kashmiri people. उसने पूरे कश्मीर में वो घूमा एज अ पटवारी, तो ही गॉट टू मीट विद डिफरेंट चंक्स ऑफ सोसाइटी। तो ही सॉ मिजरेबल प्लाइट एंड पेनफुल टॉर्मेंट ऑफ पीपल। उसने लोगों की बुरी हालत को देखा। लोग बहुत बुरी हालत में थे इनकी वजह से, ऑप्रेसर की वजह से। तो इन्होंने उसने Mehjoor ने लोगों के दुख और कुड़न को देखा। ओके, एंड देन that's why he gives a clarion call to his countrymen. He gives a trumpet call
a call to action to his people. He wants to awaken them from the deep slumber. He wants them to stand on their own feet and to raise voice against the oppressor and demand freedom and justice for themselves, boys and girls. I'll quote here one of the verses, a few verses of Mehjoor, okay, which explains this point. Okay, करी कुस बुलबुला आजाद पिंजरस मंज नालान चुक, करी कुस बुलबुला आजाद पिंजरस मंज नालान चुक, पन्ने दस्त पन्नन मुश्किलन आसान पैदा कर. And the English translation goes, who will free you, who will free you, O bulbul, while you bewail in cage? Who will free you? You are bewailing in cage, crying, making hue and cry. With your own hands, work your own salvation. तू अपने हाथों से अपनी फ्रीडम और अपनी नजात का सामान पैदा कर. यानी कि तुम मत किसी पे नज़र रखो कि कोई और आएगा, मसीहा आएगा, ठीक है, एंड वो हमें सैल्वेशन दिलाएगा, फ्रीडम दिलाएगा, जस्टिस दिलाएगा. यू हैव टू वर्क योर ओन सैल्वेशन, यू हैव टू वर्क फॉर योर ओन फ्रीडम, ठीक है. एंड देन इन द नेक्स्ट वर्स इट सेज, अगर उजनावन बस्ती गुलन हंस त्राव जीरो बम, अगर उजनावन बस्ती गुलन हंस त्राव जीरो बम, बुनुल कर, वाव कर, गगराई कर, तूफान पैदा कर. Look at the intensity. Look at the intensity of these verses, boys and girls. आप इसकी सीरियसनेस, आप इसकी सॉलमनिटी को देखिए, आप इसकी जो है आप इसके वजन को देखिए. ये कैसी कॉल है लोगों के लिए. अगर उजनावान बस्ती गुलन हस्त्राव जीरो बम, अगर तुम चाहते हो कि लोग बेदार हो जाएं. गुल यहाँ पे फूल, गुल मीन्स फ्लावर्स, फ्लावर्स जो है वो सिंबल है, वो इंडिकेट करते हैं कश्मीर के लोग. तो कहता है कि अगर कश्मीर के लोग चाहते हैं कि हम नींद से उठें और आज़ादी पालें अपने हाथों से, तो उनको क्या करना? त्राउ जीरो बम. जीरो बम मीन्स, बॉयज एंड गर्ल्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हु lull a person to sleep, who have a tranquilizing effect on one's mind. तो मेजर कहता है ये इंस्ट्रूमेंट्स छोड़ दो, ये ऐशो इशरत के सामान छोड़ दो, ये दास्तानें छोड़ दो. बुनुल कर, raise earthquake, shake the world, shake the earth. वाव कर, raise storms. गगराए कर, thundering, तूफान पैदा कर, storms पैदा करो, ठीक है, टेम्पेस्ट्स पैदा करो. दैट मीन्स महजूर अर्ज कर रहा है लोगों को टू स्टैंड ऑन देयर ओन फीट एंड टू फाइट फॉर देयर जस्टिस, टू फाइट फॉर देयर फ्रीडम. ये ऐसे नहीं आएगा बैठ के. such is the caliber of Mehjoor's poetry. Now moving forward, Mehjoor, हम बात कर रहे थे, he saw the terrible conditions of his people while he visited different villages of Kashmir. Now he saw pathetic conditions and predicament of the masses. Masses here means people. Predicament means gam, musibatein of the masses. And it broke his heart. तो ये जब इसने मुसीबत, pathetic conditions, terrible conditions देखी लोगों की, it broke his heart. Because a poet, जो poet होता है, poet has a greater sensibility. Poet के जो senses होते हैं वो ज़्यादा activate होते हैं than an ordinary man. इसलिए वहाँ पे जो है ना secondary imagination काम आती है. As per Coleridge कहता है दो imaginations होते हैं हमें, two types of imaginations. एक होती है primary, दूसरी होती है सेकेंडरी. प्राइमरी इमेजिनेशन से हम परसीव करते हैं वर्ल्ड को, जो सबके पास होती है. लेकिन सेकेंडरी इमेजिनेशन भी कोई चीज़ है जो पोइट्स के पास होती है. पोइट्स जो हम नज़ारा करते हैं, पोइट्स भी वही नज़ारा करते हैं प्राइमरी इमेजिनेशन से. लेकिन उसी नज़ारे को पोइट्स इस तरह फिर पेश करते हैं
इस तरह एक फॉर्म देते हैं कि वो पोइट्री बन जाती है, वो यूनिक बन जाती है बॉयज़ एंड गर्ल्स. नाउ so these conditions broke his heart, thus flowed teardrops. Teardrops यहाँ पे means ink, ink. Thus flowed teardrops of anguish and pain from his pen. जब इसने ये conditions देखी, he was a poet, native of Kashmir. वो किस तरह बर्दाश्त करता ये सारी conditions? तो उसके पेन से क्या teardrops flow हो गए, यानी कि pathetic poetry, poetry which is pervaded by pathos. ठीक है, pathos, sadness, anxiety for his own people. He wants to just jolt them, shake them, and tell them, stand on your own feet. Why are you just sleeping? Okay. Okay, boys and girls, I'll quote a verse here of Mehjoor, okay, which explains these things. Mehjoor says, there is mourning in men's houses when rulers like bridegrooms are luxuriating in the royalty of freedom. Nabir Sheikh a Kashmiri aam insan, Nabir Sheikh knows the meaning of the word. He went to complain while his wife elsewhere gave a birth to a child. ये एक लूज ट्रांसलेशन है उसके एक वर्स की. इसका मतलब ये बॉयज़ एंड गर्ल्स कि जो आम मासेस होते थे यहाँ पे, कॉमन मासेस, ऑर्डिनरी पीपल, उनकी जो औरतें होती थी, आर सिस्टर्स और डॉटर्स हियर और मदर्स, दे वर मोलेस्टेड बाय दीज ओप्रेसर्स. ठीक है, तो हम कहते थे आज़ादी आज़ादी, तो they were delivering babies somewhere else. They were being kidnapped, molested, tortured, mangled by these butchers, by these hooligans. That's why ये जो सारे elements हैं, they are reflected in his poetry. Okay, तो ये एक पहला part था इसका. Let's move on to the next part. Well, boys and girls, now let's form a comparison between Mehjoor and Wordsworth. There are some similarities and some dissimilarities, some differences in both these poets, literature they're writing. Now, first of all, let's look at some common features in these two in these two poets. Okay. फर्स्ट कॉमन फीचर जो इनमें है, इनकी पोइट्री में है, इट इज सिंपलिसिटी ऑफ डिक्शन. डिक्शन बॉयज एंड गर्ल्स मीन्स चॉइस ऑफ वर्ड्स, चॉइस ऑफ वर्ड्स. देखो, हर एक पोइट का एक डिक्शन होता है, चॉइस ऑफ वर्ड्स होता है, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स होता है, ट्रेजर ऑफ वर्ड्स होता है. अगर आप मिल्टन को पढ़ेंगे, मिल्टन एक खास किस्म की वोकैबुलरी यूज़ करता है. शेक्सपियर की डिफरेंट है, जॉन डन की डिफरेंट है, एंड मैजूर की इट्स डिफरेंट, एंड वर्ड्सवर्थ की डिफरेंट है. इसी को बोलते हैं डिक्शन. तो जो भी ये वर्ड्स यूज़ करते हैं, जो ये लैंग्वेज यूज़ करते हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स, इट्स सिंपल लैंग्वेज. वी कैन ऑल्सो कॉल इट colloquial language. They write in colloquial language, which is simple and easy to understand. It's the language of the common people, boys and girls. ये ऐसी लैंग्वेज नहीं है जो बम्बास्टिक हो, जो बहुत ज़्यादा ऑब्सक्योर हो, नहीं. ये इट्स द लैंग्वेज ऑफ कॉमन मासेस. And second point, second common feature, they both exalt and adore nature. दोनों poets, Mehjoor as well as Wordsworth, they respect and adore nature. इसको praise करते हैं, इसकी तारीफ़ें करते हैं, इसकी इज्जत करते हैं अपनी पोइट्री में. And both of these poets find nature alive and has power to refresh and elevate the soul of man. ये दोनों ख्याल करते हैं, सोचते हैं कि जो नेचर है इट्स अलाइव. ये समथिंग नहीं है कि जो समथिंग विच इज़ डेड, which is without feeling.
they consider it alive and they also think that it has a power. कौन सा power? To refresh, एक इंसान को fresh करता है nature, पीस ऑफ माइंड देता है एंड एलिवेट द सोल ऑफ मैन। जब इंसान नेचर के कनेक्शन में आता है, नेचर को परस्यू करता है, व्हेन वी कंटेम्पलेट ऑन नेचर, on this universe which God has created, it brings us closer to the creator. Creation, this nature brings us closer to our creator. Now third point, boys and girls, वर्ड्सवर्थ जो है, वर्ड्सवर्थ अपनी एक पोएम में बोलते हैं, एवरी फ्लावर एंजॉयज द एयर इट ब्रीथ्स एंड मून डज विद डिलाइट लुक अराउंड। इसलिए मैंने कहा कि बोथ दीज पोइट्स adore nature and they find it alive, they consider it alive and having some power. That's why ये कहता है वर्ड्सवर्थ कि एवरी फ्लावर एंजॉयज द एयर इट ब्रीथ्स। हर कोई फ्लावर अपनी ब्रीदिंग को, जब वो ब्रीथ करते हैं एयर को, तो उसको एंजॉय करते हैं, ठीक है, उनको मज़ा आता है। जिस तरह हम जूस पीते हैं, हम एंजॉय करते हैं, फ्लावर्स भी ऐसे करते हैं, दे ऑल्सो फील। मून डज विद डिलाइट लुक अराउंड, मून लाइक अ ह्यूमन बीइंग, like an animate object looks around with beauty. मेहजूर भी थोड़ा इसी किस्म इसी सोच और समझ का है। वो भी कहते हैं मून डज विद मेहजूर ऑल्सो एड्रेसेस द मून, ये भी मून को एड्रेस करते हैं, बातें करते हैं मून से। ही होल्ड्स अप अ कन्वर्सेशन विद मून बिकॉज इट्स अलाइव फॉर हिम। वाई लाइक मी आर यू रेस्टलेस? Mehjoor is restless inside. He is sad, and it seems to him that the moon is also restless. So he forms a conversation. He tries to confess something with moon. He tries to pour his heart out in front of the moon. Why like me are you restless? मेरी तरह तुम भी दुखी हो, उदास लग रहे हो. Maybe you too are aflame with love. Aflame means जलता हुआ, मतलब जब हम कुछ जलाते हैं, किस तरह कैंडल होता है जो जलता हुआ हो, तो उसको बोलते हैं फ्लेम। तो जब इंसान के दिल में मोहब्बत की चिंगारी उठती है, तब भी इंसान का दिल जो है ना, वो फायर पे होता है, उसमें आग लगी होती है। क्या तुम्हारे दिल में भी मोहब्बत की आग लगी है जिस तरह मुझे लगी है? और नेक्स्ट लाइन में कहता है महजूर, मैंने कोट नहीं किया है, कि जो तुम्हारे अंदर ये दाग है, क्या इसी वजह से, इस प्यार की आग की वजह से तुम्हें ये दाग पड़ा है जिस तरह मेरे दिल में भी एक दाग है? तो दे जस्ट कॉरेस्पॉन्ड, दे जस्ट रिलेट थिंग्स विथ ईच अदर। Okay students, now let's look at some of the differences between these two great poets. हाँ, अगर हम वर्ड्सवर्थ की बात करेंगे, वर्ड्सवर्थ finds a spiritual bond, a spiritual connection with nature. That means his view of, his perspective of nature is a pantheistic. पैंथिज्म क्या होता है? वर्ड्सवर्थ को लगता था कि जो गॉड है, जो क्रिएटर है, वो पूरे नेचर में है। गॉड हैज़ परवेडेड in each and every part of the nature. So उसको खुदा हर जगह नज़र आता था, उसको क्रिएटर हर जगह नज़र आता था, एवन फ्लावर्स में, माउंटेन्स में, बर्ड्स में, ह्यूमंस में। तो इसी को बोलते हैं पैंथिज्म। ये एक फिलॉसफी है, ट्रांसडेंटलिज्म, पैंथिज्म। तो हमें उसमें नहीं जाना, बिकॉज वर्ड्सवर्थ क्रिएटेड हिज ओन पोइटिक फॉर्म एंड पोइटिक फिलॉसफी, उसमें हम नहीं जाएंगे उस डेप्थ में। नाउ ये तो पहला है, ये चीज़ें पैंथिस्टिक व्यू ऑफ नेचर मेहजूर की पोइट्री में हम नहीं देखते हैं। मेहजूर एक स्पिरिचुअल कनेक्शन डेवलप नहीं करता है नेचर के साथ, बिकॉज ही इज़ अ मुस्लिम एंड ही बिलीव्स इन वन गॉड, एंड ही बिलीव्स कि जो गॉड है वो किसी चीज़ में समा नहीं सकता है, अंदर किसी चीज़ के। गॉड किसी चीज़ के अंदर नहीं समा सकता है, बिकॉज गॉड इज़ लिमिटलेस,
ठीक है, इज़ नॉट बाउंड टू स्पेस एंड टाइम। गॉड जो है वो टेम्पोरल नहीं है, स्पेस एंड टाइम से बाउंड नहीं है, दैट्स वाई। अच्छा, सेकेंड पॉइंट, Wordsworth's poetic world is banal and sometimes verbose. Banal, boys and girls, means something which is very common, ठीक है, and which is tedious. Tedious होता है boring type, and it's also verbose sometimes. Verbose means, boys and girls, बहुत सारे वर्ड्स, बहुत सारे सेंटेंसेस यूज़ करना अपनी बात को बयान करने में। ही यूजेस पेजेस एंड पेजेस, ठीक है, इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस हिज थॉट्स। तो वो बहुत ज़्यादा डिटेल देते हैं कभी कभी, इसीलिए हम कहते हैं हिज पोइट्री इज समटाइम्स इट सीम्स वर्बोस एंड बनाल। तो ये डिटेल देगा कि फ्लावर ऐसा है, ठीक है, मुझे कुक्कू की आवाज़ सुनकर ऐसा लगा, तो बट समटाइम्स इट सीम्स टीडियस, मोनोटोनस एंड बोरिंग। बट जो मेहजूर की पोइट्री है, ईच लाइन लुक्स लाइक अ पर्ल, एक मोती दिखती है, हर एक लाइन, एक वर्ड एक मोती लगता है। कास्ट इन अ थ्रेड ऑफ मैग्निफिसेंट पोइट्री, लगता है कि हर एक वर्ड, हर एक लाइन, हर एक सेंटेंस ऑफ मेहजूर्स पोइट्री जो है, जैसे कि उसको एक धागे में, पोइट्री के धागे में पिरोया गया है। उसकी पोइट्री एक पर्ल्स की, एक मोतियों की माला लगती है। each word is adored and beautified. Minimum words produce maximum effect in Mehjoor's poetry, because poetry जो है ना, उसका नेचर ही होता है condensed. Poetry is written in the condensed nature. It is condensed means बहुत कम यूज़ करते हैं ये वर्ड्स, they use minimum words, but these minimum words, carry immense meaning. तो जैसे हम उर्दू में कहते हैं ना, बॉयज एंड गर्ल्स, छोटा पैक बड़ा धमाका, सच इज़ द पोइट्री ऑफ मेहजूर। ओके, एट द एंड मैं कुछ और पॉइंट्स जल्दी से जो है एक्सप्रेस करना चाहता हूँ। लाइक जो मेहजूर है, मेहजूर जो पोइट्री है, इट्स नॉट आर्ट फॉर आर्ट सेक, बॉयज एंड गर्ल्स। देखो, देयर इज़ अ डिफरेंस, there's a difference. आर्ट फॉर आर्ट सेक, ये भी एक फिलॉसफी है, आर्ट की फिलॉसफी, पोइट्री की फिलॉसफी कि जो आर्ट है, लिटरेचर है, इसका कोई मकसद होना चाहिए या ये बेमकसद होना चाहिए, कि पोइट ने या राइटर ने जो कुछ लिखा उसका क्या इंटेंशन था, ये हमें देखना है कि नहीं। जो आर्ट फॉर आर्ट सेक होता है, इसमें कोई इंटेंशन नहीं होता है पोइट का, कोई एम्बिशन नहीं होता है, कोई मकसद नहीं होता है, कोई विजन एंड कोई मिशन नहीं होता है, ज़रूरी नहीं है। बट मेहजूर्स पोइट्री इज नॉट जस्ट आर्ट फॉर आर्ट सेक, इट्स आर्ट फॉर लाइफ सेक। ही इज़ अ कमिटेड राइटर, बॉयज एंड गर्ल्स। मेहजूर, मैंने बोला, ही इज़ अ कमिटेड राइटर, हिज लिटरेचर इज लिटरेचर ऑफ एंगेजमेंट, and he finds a serious responsibility towards his society, and he uses his poetry consciously, he uses his writings consciously as an instrument for furthering the cause he believes in. जिस cause, जिस मकसद में वो बिलीव करता था, जो वो चाहते थे सोसाइटी में चेंज लाना, रेवोल्यूशन लाना, पोइट्री में भी, सोसाइटी में, इंसान के जहनों में, तो उसका एक मकसद था। तो इसकी पोइट्री में वही मकसद है। ये मकसद के बगैर पोइट्री नहीं है। इट्स नॉट पोइट्री विदाउट एनी गोल, विदाउट एनी मोटिव, विदाउट एनी एम्बिशन। नहीं, ये नेचर को भी बहुत जो है सेलिब्रेट करते हैं, सेलिब्रेट नेचर इन इस पोइट्री। लाइक अगर हम देखेंगे, आपने बहुत सारी पोइम्स सुनी होंगी, लाइक वी यूज्ड टू रिसाइट दीज पोम्स एट स्कूल व्हेन वी वर किड्स 200 years ago। मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ। सो हम कहते थे, बुलबुल वनांच पोशन, गुलशन वतन च सोनुई, सोनुई वतन च गुलशन, गुलशन वतन च सोनुई, इंद सफ़ेद संगर, देवार संग मरमर, मजबाग लाल गौहर, गुलशन वतन च सोनुई। तो यहाँ पे जो वर्ड्स, मेहजूर है, कश्मीर की हर एक चीज़ को प्रेज करता है, सेलिब्रेट करता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड, his poetry is not art for art's sake wholly and solely.
His poetry has a mission. He is a man with a mission and vision. ठीक है. और मेहजूर की पोइट्री में एक खास बात ये भी है, he tries to motivate people to unite together, and to fight for their justice. तो like let me quote some verses of Mehjoor. वो कहते हैं ह्युंच मुस्लिम ह्युंच शक्कर दोच मुसलमान साफ साफ. Look at the beauty of these words. Look at the beauty of these words and look at the depth of the meaning. ह्युंच शक्कर दोच मुसलमान साफ साफ. Shakar means sugar. Hindus are like sugar, and he compares Muslims with milk and sugar. What a combination, boys and girls. How sweet. Hyunch shakkar doch Musalman saap saap. Dot be shakkar alayu panamain. Mix milk and sugar together. Nai thrayu. जो आपके बीच में disagreements है, leave disagreements. Nai thrayu mai thrayu. That means make love. Okay, develop love and affection for each other. Na ithrayu ma ithrayu panwain puz muhabbat bagarayu panwain. So such is the message of unity in Mehjoor's poetry. तो इसी तरह बहुत सारी मिसालें हैं. ठीक है. मेहजूर उस्ताद टीचर्स के बारे में बहुत कुछ कहते हैं कि उसका रोल क्या होता है. जिस तरह एक जो उस्ताद एक सुबह की जो वर्नल ब्रीज होती है, बादे सबा, वो सुबह के फ्लावर्स को जो है जगाती है, अवेकन करती है. इसी तरह उस्ताद का काम होता है. जो बादे सुबह है, सुचुवजनावन गुलन, गुल मीन्स फ्लावर, वो उनको जगाती है. एंड उस्ताद चुवजनावन दिलन, उस्ताद किसको जगाता है? दिलों को जगाता है. कॉन्शियसनेस डेवलप करता है एक बच्चे में. सच इज़ द पोइट्री, सच इज़ द जीनियस ऑफ दिस ग्रेट पोइट. तो मैंने एक कोशिश की है, इफ़ यू फाइंड दिस lecture beneficial for you in any sense, please don't forget to subscribe to my channel and also like and share it with your friends. Let's meet in another lecture in which I will take up Mehjoor's poem titled as Prayer. Till then, goodbye.